Hang Shri Guru Shri Jata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavascha Shri Rupam Savrajvatam Sahagana Raghunathan Vitam Stam Sajivam Shadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Shahagana Lalita Sri Vishakhan Vitanscha He Krishna Karuna Sindho Hina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kamshana Gaurangi Radhe Vrindavneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Puri Priye Vansha Kalpatarujyascha Kripa Sindho Bhaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. I think if they open those doors we'll get more air. Our subject today is the 10 offenses in the chanting of the holy name of Krishna. भगवान नाम कृष्ण नाम के जप में जो 10 अपराध होते हैं उसके बारे में बोलने के लिए आते हैं. In Chaitanya Charitamrita, Krishna naam kore aparadhir vichar, Krishna bolile aparadhir na hoy vikar. There are offenses to be considered in the chanting of the Hare Krishna mantra. हरे कृष्ण मंत्र के जप में अपराध का विचार होता है. Therefore, simply by chanting Hare Krishna, na hoy vikar, there's not automatically a change, or one doesn't become automatically ecstatic. इसलिए हरे कृष्ण का जप करके अपने आप कोई बदलाव नहीं आता है, अपने आप आनंद निर्माण नहीं होता. When Srila Prabhupada was asked one time what is quality chanting, he said there should be quantity, 16 rounds for the initiated devotees, and quality. तो प्रभुपाद को एक बार पूछा था कि नाम जप के बारे में क्या, तो प्रभुपाद ने कहा कि 16 माला यानी जो मात्रा है वो 16 माला की दीक्षित भक्तों के लिए, और उसके साथ गुणवत्ता भी होनी चाहिए. So, what's wrong with this? No, that the Hindi is more important than the English. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. All right, well, hello. Hare Krishna. Krishna Krishna. Okay. So Prabhupada responded that
quality. So he was asked, what is quality in chanting? तो उनको पूछा गया कि क्वालिटी यानी जो गुणवत्ता है उसका अर्थ क्या है? Someone might think quality means to chant with feeling, with love. कोई सोच सकता है गुणवत्ता का अर्थ भावना के साथ जप करना, प्रेम के साथ। Prabhupada said quality means avoiding the 10 offenses. प्रभुपाद ने कहा गुणवत्ता का अर्थ है 10 अपराध नहीं करना। So those offenses are described in many places in Srila Prabhupada's books. प्रभुपाद के ग्रंथों में इन अपराधों का वर्णन अनेक जगह पर किया गया है। And we can review them हम here. देख सकते हैं उनको। First offense is to blaspheme the great devotees who are engaged in distributing the holy name of the Lord. पहला अपराध है कि जो भगवान नाम का प्रचार करने में लगे हुए उन महान भक्तों की निंदा करना। Worse than offending the Lord is to offend the Lord's devotees. भगवान का अपराध करने से ज्यादा खराब है भगवान के भक्तों का अपराध करना। Prabhupada gave the example that a man can tolerate the hot sun on his head, but he can't tolerate hot sand on his feet. तो प्रभुपाद ने उदाहरण दिया कि जैसे कोई व्यक्ति होता है वो सिर के ऊपर गर्म सूर्य का प्रकाश सहन कर सकता है, लेकिन पैर के नीचे वो गर्म रेती सहन नहीं कर सकता। Satam ninda namna paramam aparadam vitanute vitakyatim yatam katam uzahate tad vigarham. One shouldn't criticize the devotees, blaspheme the devotees who are engaged in preaching Harinam. That's a very bad offense, worst offense. जो हरिनाम का प्रचार करने में लगे हुए ऐसे महान भक्तों का आलोचना या निंदा कभी नहीं करना चाहिए, बहुत खराब है। And Krishna won't tolerate that. कृष्ण बर्दाश्त नहीं करेंगे। The second nama aparad, Shivasya Sri Vishnurya Iha Guna Namari Sakalam Diya Binnam Pashet Sakalu Harinamahita Karaha. तो ये दूसरा अपराध के बारे में श्लोक उन्होंने पढ़ा अभी संस्कृत में। Prabhupada analyzes it this way: to separate the Lord from His holy name, qualities, pastimes, thinking them to material, that's offensive. प्रभुपाद उसका ऐसा एक अर्थ लगाते कि भगवान का नाम जो गुण रूप लीला है उनको भगवान से अलग करना है, ये उसका एक अर्थ है। Or to think that the names of the devatas, such as Lord Shiva, are as good as the name of Lord Vishnu. या फिर जो शिव जैसे देवता है उनके नाम को भगवान विष्णु के नाम के बराबर समझना। To think that Lord Shiva and the other devatas are other forms of God and therefore equal to Vishnu is an aparad. ये सोचना कि शिव और दूसरे देवता है वो भगवान के दूसरे एक रूप है, तो इसलिए उनके नाम उनके भगवान के नाम के समान है, ये सोचना भी अपराध है। Hare Krishna, Om Namo Shivaya, whatever you like, it's all the same. No, that's aparad. हरे कृष्णा ओम नमः शिवाय, जो भी आप दूसरा मंत्र जपेंगे वो सब समान है, ऐसा सोचना नहीं, वो अपराध है। The Lord Vishnu is the Supreme Personality of Godhead. Ekala Ishvara Krishna are Sabhritya. Everyone else is a servant. भगवान कृष्ण विष्णु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, एकल ईश्वर कृष्ण, बाकी सब उनके सेवक हैं। Yes, tu Narayanam Devam Brahmarudra Hari Daivate Samatvayanaiva Viksheta Vipashandi Bhavedriva. In Shastra it said that if anyone thinks that Lord Vishnu, that the other devatas are on the same level as Narayan, Brahmarudradi, Lord Brahma, Lord Shiva, or Durga, Ganesh, they're on the same level as Narayan, then he's Pashandi, an atheist. तो शास्त्रों में ऐसा बताया कि नारायण के समान अगर कोई सोचेगा कि दुर्गा गणेश वगैरह देवता है तो वो पाषंडी है, ऐसा शास्त्र में बताया है। Third, Gururavagya. Prabhupada says to consider the spiritual master material and therefore envy his exalted position. आध्यात्मिक गुरु को भौतिक समझना और इसलिए उसके पद की ईर्ष्या करना, गुरु और अवज्ञा का अर्थ यह है। Guru Shunadamati, to think of the
spiritual master as an ordinary human being is wrong. गुरु को सामान्य नर समझना गलत है। Kintu prabhuya priya evatasya. He's carrying the message of Krishna, and therefore he's on the same platform as Krishna. He's not Krishna, but he's dear to Krishna, and therefore he has to be respected as the representative of Krishna. वो कृष्ण के संदेश का वहन करते इसलिए कृष्ण के स्तर के समान है। कृष्ण नहीं है, लेकिन कृष्ण जैसा आदर उनको देना चाहिए। He should not be seen with material eyes. भौतिक नेत्रों से उनको दिखना नहीं चाहिए। Prabhupada often translates this offense to disobey the orders of the spiritual master. प्रभुपाद बहुत बार इसका अनुवाद ऐसा करते हैं, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना, ऐसा उसका अनुवाद करते हैं। The guru is present in his instructions, and if we disregard those instructions, that's offensive. गुरु उनके उपदेशों में उपस्थित है और उनके उपदेशों की अवहेलना करेंगे तो अपराध है। We get the mantra from the guru, and if we, just like you get a medicine from the doctor, if you avoid the doctor's instructions about how to take it, how do you expect to get a good result? गुरु हमको उपदेश देते हैं, जैसे डॉक्टर आपको दवा देता है और दवा कैसे लेने का इसके बारे में डॉक्टर ने जो उपदेश दिया है उसका हम अवहेलना करेंगे तो वो दवा का ही अवहेलना हो गया, डॉक्टर का अवहेलना हो गया। Or the doctor says you take this medicine, you follow this diet, you follow this regime. You have to do that. You can't just say I'll take the medicine and forget the rest. तो डॉक्टर बोलता है कि तुम ये दवा लो, साथ में ऐसा ऐसा खाओ। आप बोलेंगे नहीं मैं खाली दवा खाऊंगा, बाकी का मैं नहीं सुनूंगा, तो वो गलत है। So one has to honor the orders of the spiritual master. गुरु के आदेश का सम्मान करना चाहिए। The fourth offense, Shruti Shastra Nindanam, to blaspheme the Vedic literature or literature in pursuance of the Vedic version. श्रुति शास्त्र निंदनम यानी वेदों की निंदा करना या वेदों के अनुशीलन में जो दूसरा साहित्य है उसकी भी निंदा करना। I only accept the Vedas. I don't accept the Puranas or the Mahabharata. That this is also wrong. मैं केवल वेद मानता हूँ, मैं पुराण वगैरह नहीं मानता, तो ये भी एक अपराध है। And what will he understand of, he's a great knower of the Vedas. What will he actually understand? तो क्या समझेगा वो? जैसे कोई बोलेगा मैं वेदों का बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ, तो क्या समझेगा वेदों में से वो? In this age, the Vedic message has been made accessible in the form of the Bhagavad Gita and especially Srimad Bhagavatam. इस युग में वैदिक संदेश को उपलब्ध कराया गया है भगवद गीता के माध्यम से, श्रीमद् भागवतम के माध्यम से। So one shouldn't minimize the importance of the Shastras, including the Puranas, Bhagavad Gita. तो शास्त्र के महत्व को कभी कम नहीं समझना चाहिए, जिसमें भगवद गीता भी सम्मिलित है, पुराण भी सम्मिलित है। Fifth offense, Artavad, to consider the glories of the holy name to be exaggerations. पांचवा अपराध अर्थवाद कि भगवान नाम की महिमा को अतिशयोक्ति समझना, ये भी अपराध है। These are just stories to encourage people to follow this religion. हाँ, ये तो कुछ कहानियाँ हैं, लोगों को ये बताने के लिए कि ये धर्म का पालन करो, ऐसा सोचना। No. Nalachintamani Krishna's Chaitanya Rasa Vigraha. Purna Shuddha Nitya Mukta Vinnata Namanami. There's no difference between Krishna and his holy name. So all the benefits that one could get from the association of the Supreme Personality of Godhead, one can get from the association of his holy name. कृष्ण और उनके नाम में कोई भेद नहीं है, जो भी लाभ हमको भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सान्निध्य से मिलता है, वही नाम वही फायदा हमें उनके नाम के सान्निध्य से मिलता है। Aham tam sarva papebhyo mokshayashyami. Mamshucha. Krishna says, don't worry, I'll give you liberation, I'll take you back to Godhead, I'll free you from sinful reactions, everything. कृष्ण जैसा कहते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, तुम्हें भगवत धाम लेके जाऊंगा। कृष्ण जैसा स्वयं कहते हैं। So Harinam is as good as Krishna, the same result. तो हरिनाम भी कृष्ण के ही समान है, उसमें एक ही फल मिलता है। Then 6, Harinamni Kalpanam, to consider the
holy name of the Lord imaginary. हाँ, तो हरि नाम की कल्पना यानी भगवान के नाम को काल्पनिक समझना, ये छठवां अपराध है। Actually, one offense is explained as thinking that the glories of the Lord are imaginary, and the other is to give one's own interpretation of the holy name. एक अपराध बताया है कि भगवान की महिमा को काल्पनिक समझना, और दूसरा है कि उसके ऊपर अपना अर्थ लगाना, अपना कुछ मन का अर्थ लगाना। It helps your yoga breathing. Hare Krishna, Hare Krishna. हाँ, इससे आपके योगाभ्यास में प्राणायाम में फायदा होता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। It opens your chakras. आपके चक्र खुल जाते हैं, चक्र 7 चक्र होते हैं। But this, that, so many concoctions one can come up with. ये और वो बहुत सारा मानसिक तर्क व्यक्ति कर सकता है। Oh, one shouldn't indulge in imaginary explanations of Harinam. तो हरिनाम के काल्पनिक अर्थों में हमें उलझना नहीं चाहिए। Harinam is Krishna, that's all. हरिनाम कृष्ण है, बस। 7. Namno balad yasya hi papa buddhir. Navidyate tasya yamayar hi shuddhi. To commit sinful activities on the strength of the holy name. नाम के बल पर पाप करना, नामनो बलात् यस्य हि पाप बुद्धि। This is described as the worst offense. ये तो सबसे खराब अपराध बताया गया है। It means employing Krishna. इसका अर्थ है उपयोग करना, कृष्ण को सेवा में लगाना, उपयोग में लगाना। As my agent for freeing me from the sinful reactions that I wish to continue to perform. जैसे वो कृष्ण मेरे एजेंट है, मेरे हस्तक है कि जो भी मैं पाप करता हूँ उससे मुक्त कराने के लिए मैंने उनको रखा हुआ है। The holy name of the Lord is not our agent or servant or tool. भगवान का नाम कोई हमारा एजेंट या हस्तक या कोई साधन नहीं है हमारा। We're meant to be servants of the holy name. हम भगवान के सेवक हैं, हमें भगवान का सेवक बनना चाहिए। But people want to commit sinful activities, and then they think this is a very good arrangement. I know that it's wrong, but by chanting Hare Krishna, Krishna is so kind, he'll forgive me, he'll free me from the reactions. तो लेकिन लोग क्या सोचते हैं, बहुत ही अच्छा है, ये भगवान ने हमारे लिए अरेंजमेंट यानी व्यवस्था किया कि मैं पाप करता रहूंगा और कृष्ण मेरे पाप का नाश करते रहेंगे, उनका नाम जपूंगा। After all, I'm a devotee. आखिर में मैं भक्त हूँ। So I'll chant and Krishna will understand. मैं फिर जब करूँगा कृष्ण समझ जाएंगे। In this way, let me do it and then chant and then do it again, some sinful activities, then chant. तो इस तरह से चलो मैं करता हूँ, फिर मैं जब करूँगा, फिर वापस करूँगा, फिर वापस जब करूँगा, इस प्रकार चलता रहेगा। Somehow keep a balance. बैलेंस बना रहेगा, संतुलन बना रहेगा दोनों का, पाप का और नाम का। This is very wrong. ये बहुत ही गलत है। Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur spoke about using the Shalagram Shila. Someone is using the Shalagram Shila to crack nuts. जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उदाहरण दिया कि कोई शालिग्राम शिला लेके कुछ बादाम फोड़ रहा है, तो ऐसा हो गया। As if the stone was there for his convenience and enjoyment. जैसे वो पत्थर उसी की सुविधा के लिए रखा गया था। So the Harinam is not meant to be used by us to protect us from reactions of sinful activities that we wish to perform. तो हरिनाम का उपयोग वापर नहीं करना चाहिए कि जो आप कर्म हम करना चाहते उससे सुरक्षा के लिए। Krishna says in Bhagavad Gita, Yesham tvantagatam papam jananam punyakarmanam te dvandvamoha nirmukta bhajante mam jutapatai. Those who are done with sinful activities and whose activities are pious can be freed from duality and illusion, and they can engage in devotional service with determination. तो जिन्होंने अपने पाप खत्म कर दिए और पुण्य में आए हैं,
वे ही द्वंद्व से मुक्त हो सकते हैं और मेरा भजन करते हैं। ऐसा कृष्ण कहते हैं। Therefore, at the time of initiation, one promises the spiritual master, no gambling, no meat eating, no pastry, no gambling. इसलिए दीक्षा के समय शिष्य वचन देता है कि मैं जुआ नहीं करूंगा, स्त्री संग अवैध नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा। One has to follow that strictly. पालन करना पड़ेगा। Not go on making a farce of chanting the holy name to justify one's or counteract one's sinful life. ऐसा नहीं कि नाम जपते जाओ और उसका उपयोग करते जाओ पाप को नष्ट करने के लिए। 8. Dharma vrata tyag hutari sarva shubha kriya samyam api pramada. To think that the chanting of Hare Krishna is a kind of ritualistic activity, another one of these ceremonies like following a vow or practicing renunciation or sacrifice, those, तो ये सोचना कि नाम जो है जपना वो एक व्रत वैकल्य जैसा है या यज्ञ करने या दूसरा कोई पुण्य करना उसके समान है। We do those things for material advancement. हम ये सारी चीजें करते हैं भौतिक प्रगति के लिए। Create an auspicious atmosphere. एक पवित्र वातावरण पैदा करने के लिए। Aid in our prosperity, health, and so on. हमारी समृद्धता में मदद करने के लिए, बढ़ाने के लिए। The chanting of Hare Krishna is not another such pious performance. तो हरे कृष्ण का जब ऐसा ही दूसरा एक पुण्य कर्म नहीं है। One time there was a meeting in the home of Raghunath Das Goswami's uncle and father. एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी के चाचा और पिताजी उनके घर में एक बैठक हुई सभा। And the saintly people were discussing discussing the glories of the holy name. और संत पुरुष भगवान नाम की महिमा के बारे में चर्चा कर रहे थे। Someone said that chanting of Hare Krishna chanting of Hare Krishna is as good as performing 10,000 Ashwamedha yajnas. किसी ने कहा हरे कृष्ण का जप जो है वो 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने के समान है। So Haridas Thakur was present. हरिदास ठाकुर वहाँ उपस्थित थे। He said, "This is an aparad." उन्होंने कहा ये अपराध है। To compare the chanting of the holy name to one of these ritualistic ceremonies recommended in the Vedas. तुलना करना भगवान नाम की इन वेदों के कर्मकांड के साथ। 25,000, 50,000, 100,000. No, Harinam is Krishna himself. It's on a different level. अरे 25,000 अश्वमेध यज्ञ 50 नहीं, हरिनाम कृष्ण है, तुलना मत करो। The ninth offense, Ashradhane vimukhe pyashrinvati yas chopadesha shiv nama parad. To preach the glories of the holy name to those who have no intelligence or faith in the subject. नाम की महिमा का प्रचार उन लोगों को करना जिनके पास बुद्धि नहीं है, श्रद्धा नहीं है उनको। And Prabhupada explains, such people should be given the chance to hear the chanting of the Hare Krishna mantra. प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसे लोगों को अवसर दिया जाना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सुनने का। But in the beginning, they should not be instructed about the glories or the spiritual significance of the holy name. लेकिन शुरुआत में उनको महिमा या आध्यात्मिक महत्व भगवान नाम का वो समझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। Krishna is the Supreme Personality of Godhead. He has pastimes in Vrindavan. Hare is calling out to Radharani. All of these things. तो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो वृंदावन में लीला करते हैं, हरे यानी राधा रानी को पुकारना, ये सब नहीं बनता। So many things. By constant hearing of the holy name, their hearts will be purified. सतत श्रवण करके भगवान नाम का उनका हृदय शुद्ध हो जाएगा। Then they will be able to understand the transcendental position of the holy name. फिर वे समझ पाएंगे भगवान नाम की दिव्य स्थिति को।
10. Shrutepi nam mahatmye yapriti rahito naraha aham mamadi paramo namni so kaparada krit. If one has heard the glories of the transcendental holy name of the Lord, but nevertheless continues in a materialistic concept of life, thinking, I am this body, and everything belonging to this body is mine, aham mameti, and does not show respect and love for the chanting of the Hare Krishna Mahamantra, that is an offense. तो जिसने भी दिव्य नाम की महिमा को सुना है, भगवान के दिव्य नाम के, लेकिन फिर भी वो भौतिकवादी संकल्पना में ही रहता है, ये सोचते हुए कि मैं ये शरीर हूँ और शरीर से जुड़ा हुआ सब कुछ मेरा है, अहम ममेति, और कोई आदर नहीं दिखाता, प्रेम नहीं दिखाता हरे कृष्ण महामंत्र के जप में, कीर्तन में, तो एक अपराध है. We should seriously endeavor to get free from this material bodily identification. भौतिक शारीरिक तादात्म्य जो है उससे हमें मुक्त होने का प्रयास करते रहना चाहिए. And we should seriously chant the holy name of the Lord to develop our dormant Krishna consciousness. तो इसलिए गंभीरता से जप करते रहना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र का, ताकि हमारा सुप्त कृष्ण प्रेम जागृत हो. Avoiding these 10 offenses will enable us to make progress quickly on the spiritual path. ये 10 अपराध नहीं करने से हम जल्दी से जल्दी प्रगति कर पाएंगे इस मार्ग में. I'll stop here and see what questions you might have. तो किसी का कोई प्रश्न यहाँ समाप्त करेंगे. Oh, we only have one microphone. Hare Krishna. Whenever we distribute book, at that time, I will translate. Janmashtami and that how in translation it is given how and in what meaning is how. So people outside you say that this is wrong. So how to convince? Sounds like something that has nothing to do with the topic, right? Not on the topic. Off topic. He is saying Questions are wanted concerning the topic. महाराज कह रहे हैं जो विषय वस्तु आज की है उसके बारे में प्रश्न पूछिए. हरे कृष्ण महाराज, जैसे आपने बताया कि एक जो 10 नाम अपराध में एक नाम अपराध है कि भगवान के पवित्र नाम पे अपराध कर रहा है, नाम के आधार पे अपराध कर रहा है, जिसको नाम और कृष्ण में कोई डिफरेंस नहीं है. अगर जो व्यक्ति भगवान का नाम जप करता है और अपराध करता है तो ये पॉसिबल हो सकता है कि धीरे धीरे वो पूरी तरीके से बदल के भक्त हो जाए. क्या ये पॉसिबल है? अपराध करता है और नाम जप करता है. He is asking, you said the 7th offense. So, is it possible that someone is doing aparadh at the same time he is chanting also? So, while chanting slowly, is it possible that he will become free from the offenses? There are 3 stages in chanting the holy name of the Lord. भगवान नाम के जप में 3 अवस्थाएं होती है. 3. First stage is offensive chanting. पहली अवस्था है अपराध सहित जप. We're full of offenses. जिसमें अपराध से भरा हुआ होता है. Second stage is the clearing stage. दूसरी अवस्था है क्लियरिंग स्टेज, यानी अपराध निकलते जा रहे. By chanting Hare Krishna, gradually we're purifying our hearts and the offenses are being diminished. तो भगवान नाम का जप करते करते धीरे धीरे हृदय शुद्ध हो रहा है और अपराध कम होते जा रहे हैं.
by seriously chanting under proper guidance, dhire dhire, the offenses are गंभीरता से जब करते Cleansed. हुए और सही मार्गदर्शन में वो धीरे-धीरे हो जाएगा. Then, third stage is the pure stage of chanting the holy name. तीसरी अवस्था शुद्ध अवस्था है भगवान नाम के जप की. That's the stage of ecstatic love of Krishna. The symptoms of love of Godhead appear in the person of the devotee. It is so many things. तो अत्यानंदपूर्ण भगवत प्रेम और सारे लक्षण भी प्रकट हो रहे हैं उसके शरीर में. बहुत सारा वो जो होता है वो तीसरी अवस्था में. Actually, Srila Jiva Goswami, Rupa Goswami, they remark that these external symptoms are less important. रूप गोस्वामी ने ये बताया है कि ये बाह्य लक्षण इतने महत्वपूर्ण नहीं है. Because they can be imitated. क्योंकि उन बाह्य लक्षणों की नकल भी की जा सकती है. So there are other symptoms that are given more importance. तो दूसरे कुछ लक्षण है उनको ज्यादा महत्व दिया गया है. To be always have a taste for the chanting of the holy name. हमेशा रुचि होना भगवान नाम के जप के लिए हमेशा रुचि रहना ये एक लक्षण बताया है. To have detachment from material life, material desires. भौतिक जीवन से निरासक्ति निर्माण होना वो भी एक लक्षण बताया गया है. In this way, there are different symptoms. इस प्रकार से अलग-अलग लक्षण है. So, the more we chant Hare Krishna, the more we become purified, coming from the third stage to the second stage, then we hope to the first stage. जितना हम हरे कृष्ण जप करेंगे उतना हम शुद्ध होते जाएंगे. फिर पहली अवस्था, फिर दूसरी अवस्था, फिर तीसरी अवस्था. The Goswamis recommend that if I'm chanting offensively, it's not that I should say, oh, my chanting is so offensive, full of aparats, let me give up this chanting. I'm just offending Krishna. गोस्वामी गण बताते हैं कि अगर आप अपराध से ही जप कर रहे तो आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अरे मैं तो बहुत अपराध कर रहा हूँ, मेरा पूरा जप अपराध से भरा हुआ है, चलो छोड़ देता हूँ हरे कृष्ण. ऐसा नहीं बोलना चाहिए. They say, take shelter of the holy name, go on chanting, on and on and on and on. Gradually you'll come to the point. तो भगवान नाम की शरण में जाओ और जब करते रहो, फिर भगवान नाम संभाल लिया. Prabhupada said it's a cleansing process. प्रभुपाद कहते हैं ये साफ सफाई करने की प्रक्रिया है. Means gradually. यानी धीरे-धीरे. Many. That's all. Someone is sitting and chanting, and some Vaishnava is going. So should he stop his chanting and pay respects to Vaishnava, or just he should just continue chanting? Well, it's not that every time a Vaishnava moves this way or that way, we stop everything. ऐसा नहीं कि वैष्णव लोग हमेशा ऐसी अपेक्षा करेंगे कि हाँ इसको सब बंद कर देना चाहिए, मेरी तरफ ध्यान देना चाहिए. But it's said that one can interrupt anything to serve a Vaishnava. लेकिन ये भी बताया गया है कि वैष्णव की सेवा करने के लिए कुछ भी बंद कर सकते हैं आप. It's not just a question of offering, of bowing down, यह केवल देने का या झुकने का प्रश्न नहीं है, offering service. लेकिन सेवा करने का प्रश्न है. Is that okay? If someone is saying Hare Krishna, can they reply? Sure. क्यों नहीं? Someone says Hare Krishna, and we say Hare Krishna. तो हम भी बोले Hare Krishna. Even in Vrindavan, Prabhupada was walking on Bhaktivedanta Swami Road. Back in the old days when there were not so many, when you could walk there. And some gentleman, local person would be walking, and in the traditional way, they would greet Prabhupada, Jai Radhe. तो प्रभुपाद भक्तिवेदांत स्वामी रोड पर चलते थे उन दिनों में,
तो ऐसा ही कोई चलते चलते ऐसे पारंपरिक तरीके से जय राधे करके कोई बोलेगा प्रभुपाद को, and Prabhupada would return, Hare Krishna. और प्रभुपाद कैसा प्रसाद देंगे? हरे कृष्णा, ऐसा बोलेंगे. There were questions this side. Hare Krishna Prabhuji. It's a very recent phenomenon for me that I've joined this path. So I not do much, maybe twice a day. Whenever I'm doing chanting, sometimes my mind thinks of something else. Then I come back and I just continue. So it was not mentioned as an aparadh in the 10 aparadhs that you mentioned, but somewhere I feel that it's not right. So what do you have to say about it? Hindi mein? Yeah. So It's his question, he can ask him. मैं जब करता हूँ तो मेरा मन भटक जाता है और फिर मुझे याद आता है कि मेरा मन को मैं वापस लाता हूँ. तो आपने जो 10 अपराध बताए उसमें वो ऐसा ये अपराध नहीं था, लेकिन फिर मुझे लगता है कि गलत कुछ हो रहा है. तो ये क्या सही है? You're exactly right. आप एकदम सही कह रहे हैं. एकदम That सही कह रहे हैं. we're meant to chant with attention. हमें ध्यान पूर्वक जप करने की जरूरत है. But the mind wants to go this way, that way, and the other way. लेकिन हमारा मन यहाँ वहाँ जाना चाहता है. Therefore, in the Bhagavad Gita, Krishna says, Yato yato nischalati manas chanchalamasthiram tatastato niyamyaita datmanyeva vashamneye. He says the mind is fickle, chanchal, unsteady, wanders this way and that way. तो गीता में भी श्लोक आपने सुना यतो यतो वाला. तो कृष्ण भी कहते कि मन तो जाएगा वहाँ पर, लेकिन आप उसको लेके आओ. So Krishna says, wherever the mind goes, because of its restless and unsteady nature, one should just bring it back. कृष्ण यही कहते कि जहाँ भी मन जाता है उसके चंचल स्वभाव के कारण आपको क्या करना चाहिए? उसको पकड़ के वापस लेके आना चाहिए. Bring the mind back to the holy name of Krishna. Bring the mind back to Krishna consciousness. मन को पकड़ के वापस लेके आओ कृष्ण के नाम में, कृष्ण के पवित्र नाम में. This was the practice. यही तो अभ्यास है. It's like you train a bull, and in the beginning the bull wants to go this way or that way, but by proper training it understands I'm supposed to go around and around and around, not go this way, that way. Pile. हाँ, तो वो कोलू का बैल जो होता है वो भी यहाँ वहाँ जाने को कोशिश करता है, लेकिन उसको याद आता है कि नहीं मुझे गोल गोल ही घूमने का, तो उधर ही आएगा वापस. There's a question way in the back, or there's lots of questions. Way in here, lots of questions. How do you come to know that you have reached to the third stage of practice? Okay, I will remember this. How do you come to know that you have reached the third Hare stage Krishna, of Maharaj. chanting? I have a question regarding the first offense, blaspheming the devotees. There are different kinds of people who have different nature. For some people, they are normally very humble, they don't see bad in others. They've always been like this, or they've come to the movement and they've changed. And to the other extreme, there are people who are naturally very, very frank. And that's their nature. They don't want to hurt anybody, but that's their style. They speak good, bad, whatever they see, they just speak it, they have nothing in their heart, they don't want to hurt somebody. But for such people to change, how do they change? They can't change overnight. Like we cannot, near our temple, the road has been dug up and they put a barricade, no entry. So for such people, they cannot just stop blaspheming the devotees because of their inherent nature. So how do they do it?
हरे कृष्णा। तो इनका प्रश्न हिंदी में कि शॉर्ट में बताऊंगा। पहला जो अपराध है कि भक्तों की निंदा मत करो। लेकिन कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि वो उनके मन में कुछ नहीं होता है, लेकिन वो फ्रैंक होते हैं। फ्रैंक यानी जो सही तौर होता है, जो मन में आता है बोल देगा। तो फिर वो अपराध करने से कैसे बचेंगे? जैसे मंदिर के बाहर किसी ने नो एंट्री का बोर्ड लगाया है, तो उसको तकलीफ हुई आने में, तो भक्तों की निंदा कर देता है कि ऐसा ऐसा इन्होंने ऐसा किया भक्तों ने। तो क्या ये अपराध है? और अगर अपराध है तो कैसे इससे मुक्त हो? One has to learn to control the tongue. व्यक्ति को अपनी जिह्वा का नियंत्रण करना सीखना चाहिए। Just like in the court, the judge may say something. You're a lawyer in the court and the judge says something, you think it's the stupidest thing you've ever heard. But you don't show your frank and honest nature by saying, "My lord, that's the stupidest thing I've ever heard." तो जैसे कोर्ट है, न्यायालय, उसमें न्यायाधीश कुछ बोलता है और आप सुन रहे हैं और आपको लग रहा है कि सबसे बकवास बात इसने बोला है, लेकिन फिर भी आप खड़ा रह के तुरंत नहीं बोलते, जज साहब आपने एक खराब बकवास बात बोला है, ऐसा उस समय नहीं बोलते आप। One has to know that no, he's the judge. I have to show respect. नहीं, व्यक्ति को पता होना पड़ेगा कि नहीं ये तो जज है, इसको मुझे आदर दिखाना पड़ेगा। The child who's been brought up properly doesn't say to his mother or father, "You're such a fool." जैसे बच्चा अगर माँ बाप को बोलेगा, अरे कितने मूर्ख है आप, ऐसा बच्चा बोलेगा। You're always coming up with crazy ideas. You want me to do this? You want me to do that? हमेशा पागल जैसी कल्पना लेकर आते हैं आप, ये करो वो करो, ये क्या है? And say, well, you know, I'm just an honest person. This is what I feel. बच्चा बोलेगा, अरे मैं तो फ्रैंक व्यक्ति हूँ और प्रामाणिक व्यक्ति हूँ, मेरे मन में जो आता है मैं बोलता हूँ। He knows I have to calm down, control my mind. बच्चे को मालूम है कि मुझे ऐसा कर नहीं सकता मैं, मुझे तो शांत रहना पड़ेगा, चुपचाप होना पड़ेगा। So even if we have a critical nature, I also have a very critical nature, my tendency also is to, you know, speak straightforwardly. तो यद्यपि हमारा जो आलोचना करने का स्वभाव है, जैसे मेरा भी स्वभाव आलोचना करने जैसा है, मैं भी मुझे तुरंत बोलने का मन होता है कि इसको मैं बोलूँ, आलोचना करूँ। But we have to learn that when we speak to the Vaishnavas or about the Vaishnavas, we have to be very respectful. लेकिन हमको पता होना पड़ेगा कि जब वैष्णवों से बात करते तो आदर से ही बात करना पड़ेगा। If a flower airplane came from Vaikuntha and Vishnu Dutas with 4 arms came off the plane, you wouldn't think that of speaking with them like buddies. तो अगर वैकुंठ का विमान यहाँ पर आएगा और उसमें 4 विष्णु दूत नीचे उतरेंगे, तो आप ये सोचेंगे कि ये कोई भी साधारण व्यक्ति है। Why'd you land your plane over here? Can't you see that we're growing sabji over here? अरे ये विमान आपने यहाँ पे काय को उतारा, इधर उतरने का अच्छा रहता था ना हमारे लिए, ऐसा बोलेंगे क्या? यहाँ पे हमारा सब्जी लगा है। We have to learn how to offer respect to the Vaishnavas. This is part of our training. हमें सीखना पड़ेगा वैष्णवों को आदर कैसे प्रदर्शित करें, हमारे प्रशिक्षण का भाग है। Because we have to see that the Vaishnavas are dear to Krishna. हमें देखना पड़ेगा कि वैष्णव कृष्ण को बहुत प्रिय है। So if I want to be dear to Krishna, I should be dear to the Vaishnavas also. अगर मुझे कृष्ण को प्रिय बनना है तो मुझे वैष्णवों को भी प्रिय बनना पड़ेगा। You know, well, some people they like to keep a dog as a pet. कुछ लोग कुत्ता रखते हैं, कुत्ता। So the expression is love me, love my dog. तो व्यक्तिकरण क्या है? मुझसे प्रेम करते हो, मेरे कुत्ते से भी प्रेम करो। Prabhupada said, you meet a man, he has a dog, you say, oh, what a nice dog you have. तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि कोई कुत्ता होगा तो उसको बोलना पड़ेगा उस आदमी को कि तुम्हारा कुत्ता कितना प्यारा है। Then the man becomes very happy. Yes, he's a first-class dog. कुत्ते को अच्छा बोला तो आदमी भी खुश होता है, हाँ मेरे कुत्ते को अच्छा बोला, तो वो तुम अच्छे आदमी हो। Because the dog is dear to the man. If we appreciate the dog, the man becomes. कुत्ता वो आदमी को प्रिय है तो कुत्ते का सराहना करेंगे तो आदमी का भी सराहना हो जाता है। Is that all right? क्या बराबर है? Yes. No, just speak loud. जोर से बोलो।
takes time to come to that stage. Yeah, you said we can't change overnight, so you can take 2 nights, 3 nights, it's all right. ठीक है, जैसे आपने बोला ओवरनाइट चेंज नहीं होगा, एक रात में बदल नहीं सकते, 2 रात को 3 रात में क्या लगेगा? There was a question of Mataji. Oh yeah. How do you know that you have reached the level of third stage of chanting? She's asking, you mentioned 3 stages of chanting. How do we know that we have reached the third stage? The highest stage. First stage. इनका प्रश्न, इन्होंने भगवान महाराज ने बताया कि नाम जब की 3 अवस्था है, पहली, दूसरी, तीसरी, तो हमको कैसे पता चलेगा तीसरी अवस्था में हम पहुंचे? The perfect devotee never thinks, now I've come to the topmost stage. जो परिपूर्ण भक्त है कभी नहीं सोचता कि हाँ मैं अभी सर्वोत्तम स्थिति में आ गया. He always thinks that he's on the second stage or the third stage. वो हमेशा यही सोचता है कि मैं दूसरी अवस्था में हूँ या तीसरी अवस्था में हूँ. I don't control it, send it, but there's lots of people who want to ask questions, one here, one there, one there. महाराज अब कह रहे थे कि And also we're running out of time. महाराज अब कह रहे थे कि जो पहला नाम अपराध है, the first offense, we were mentioning that distributing love, those who are distributing holy names, offending them is first offense. So my question is that other devotees who are not distributing love, distribute holy names, so is it less offense, or like those who are checking the coupon of Prashadam, those who are not distributing holy names, so offending them, is it less offense or? Not recommended. इसका प्रश्न बहुत ही मार्मिक है. इन्होंने पूछा है कि आपने कहा पहला अपराध है कि जो भगवान नाम का प्रचार करते हैं उनकी निंदा करना नाम अपराध है. लेकिन जो भक्त नाम का प्रचार नहीं करते, दूसरा सेवा कर रहे हैं, जैसे कोई कूपन बांटने का सेवा कर रहे हैं, तो उसका अपराध करेंगे चलेगा? They gave you the answer. लोगों ने लोग हंसे तो आपको उत्तर मिल गया उसका. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, are there any guidelines for Kayik, Manasik and Vachik? That means when you say something, when you think something, and when you do any activity which is done through your body. Like for instance, if you are cursing somebody, if you are hitting somebody, or if you are mentally, thinking and abusing or cursing somebody. So are there any guidelines to which a Vaishnava or a devotee of Krishna should think or keep in constant? तो अपराध भी हम 3 प्रकार से कर सकते हैं. एक मानसिक, मन में अपराध कर सकते हैं, बोल के वाचिक अपराध कर सकते हैं, या शारीरिक, इसको मारपीट कर सकते हैं. तो क्या वैष्णव के लिए गाइडलाइन या मार्गदर्शक तत्व है कि इसके बारे में हम कैसे नियंत्रण करें, मानसिक, वाचिक और शारीरिक? We should try to see that all the devotees are engaged in the service of the Lord. हमें ये देखने का प्रयास करना चाहिए कि सारे भक्त भगवान की सेवा में लगे हुए हैं. That's more important than this or that discrepancy. तो ये बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये उस बात से. And I should also see if I have a critical mind, I'd like to, see things straight and call them as they are, then I should look at my own offenses. तो हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या मेरा भी मन ऐसा आलोचना वाला है, और हमें अपना मैं क्या अपराध कर रहा हूँ वो भी देखना चाहिए. My own shortcomings. मेरी खुद की जो कमियां हैं वो. Therefore Chaitanya Mahaprabhu said, Amanina Mananena. Kirtaniya Sada. इसीलिए शिक्षा शतक में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अमानिना माननेन, यानी मान की अपेक्षा मत करो, लेकिन मान दूसरों को दो. I'm willing, but Hare Krishna. During chanting, I sleep. one second. These people are here all the time.
the outsiders give more opportunity. Hare Krishna. Prabhuji, those initiated devotees who just finish 16 round as per commitment to spiritual water, they chant 16 round to finish. But consciousness and mind, उनके अंदर भाव नहीं होता है, तो क्या ऐसा करेंगे ऐसे? So there is no, the first part you heard, second part in Hindi is that there is no भाव. So हिंदी में कि कुछ भक्त लोग गुरु को दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए 16 माला जप करते हैं, उनमें भाव नहीं होता है, केवल 16 माला पूरा करने के लिए 16 माला करते हैं. तो कैसे चलेगा? Because we're committing 10 offenses. ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम 10 अपराध करते हैं. Simple thing. If I'm not getting the result by chanting Hare Krishna, it means the chanting is not yet performed without offenses. कृष्ण का जप करके अगर फल नहीं मिल रहा है, परिणाम उसका वांछित, तो इसका मतलब मैं अपराध कर रहा हूँ, 10 नाम अपराध. Therefore, I'm not getting the taste. I'm not getting ecstasy while chanting Hare Krishna. इसीलिए नाम की रुचि नहीं मिल रही है, नाम का भाव नहीं मिलता है. There's Neelawala has a question. Krishna, what is the radically different method of Vairag and Vairagi? I don't think I understood. Any method different from Vairag and Vairagi? Any method important than Vairagya or Vairagi? Is there any method more important than Vairagya? Or? Is there any method more important than Vairagya or Vairagi? Is that you want to say? Difference between Vairagya and Vairagi? Yes. Vairagya means detachment or renunciation. Vairagya का अर्थ है निरासक्ति, अनासक्ति. And Vairagi is the person who's doing the detachment or renunciation. और वैरागी का मतलब है जिसके पास वैराग्य है या जो वैराग्य का क्रिया कर रहा है, वो वैरागी है. Like sannyas or sannyasi, papi. जैसे संन्यास, सन्यासी, पाप, पापी, वैसा. Like that. कितनी देर तक चलना है? Hare Krishna Maharaj, how we should chant? Because we love the chant, and while chanting, the lot of things come in the mind. Hindi में बोलेंगे. चैंटिंग कैसा करना चाहिए? क्योंकि चैंट करते समय बहुत कुछ दिमाग में ये बात आती है, वो बात आती है, ये हो रहा है. मुझे चैंट करने को अच्छा लगता है. How do we chant? While chanting, this thought comes, that thought comes. I like chanting. We go on chanting. जप करते रहिए. And gradually the aparads will decrease. और धीरे-धीरे अपराध कम होंगे. Prabhupada said, you fix your mind on the sound of the holy name. प्रभुपाद ने कहा कि भगवान नाम की जो ध्वनि है, आवाज है, उस पर ध्यान एकाग्र कीजिए. Prabhupada said, just try to hear yourself chant sincerely. प्रभुपाद ने कहा कि आप खुद को सुनिए कि कैसे आप प्रामाणिकता से जप कर रहे हैं. Is that all right? खुद को सुनिए कि कैसे आप प्रामाणिकता से जप कर रहे हैं. बराबर? Go on with that desire. Let me chant nicely. Let me chant nicely. इस इच्छा के साथ आगे बढ़ो कि मुझे अच्छा जप करना है, मुझे अच्छा जप करना है, मुझे अच्छा जप करना है. Krishna will help you. कृष्ण निश्चित रूप से मदद करेगा. Thank you all very much. Hare Krishna.
Last question. Last question. नहीं हूँ बहुत लोगों ने प्रचार किया है, इसके लिए वो लोग बोल रहे हैं, इसके लिए मैं दान का जब करने की कोशिश करता हूँ और बोलते भी हैं कि आगे जाके आपको शिक्षा लेना पड़ेगा, लेकिन वो बोल रहे हैं कि एलिजिबिलिटी आपका है, जब समझो एलिजिबिलिटी आने के पहले या नहीं भी आई तो मेरे डेथ हो गई तो आगे क्या I am not a devotee. I am not a devotee, but people they preach me and I am going to temple. I am going to temple. I am not a devotee. And people say you have to have what eligibility for taking initiation. They are saying eligibility. But suppose before getting the eligibility, I die. My death occurs, what will happen? You'll have to come back to finish the job. Come back to finish the Job. job. आपको वापस आना पड़ेगा ये काम पूरा करने के लिए। अगर वो एक ऐसा आपका होता है। And Prabhupada advised us, don't wait till the next lifetime. प्रभुपाद ने ये बोला है कि अगले जन्म तक राह मत देखो आप, अगले जन्म की राह मत देखो। If I'm lacking the qualifications, if I'm not seriously chanting, if I'm not following these regulative principles, then let me get serious. अगर मुझ में योग्यता नहीं है और मैं नियम पालन करने में सक्षम नहीं हूँ, तो मुझे सीरियस गंभीर बनना चाहिए। The students all know I'm not qualified for the exam. विद्यार्थी लोग जानते हैं कि मैं परीक्षा पास करने के लिए लायक नहीं हूँ, सुयोग्य नहीं हूँ। So he doesn't say, well then forget the exam. Let me study, let me be serious. तो ऐसा नहीं बोलता परीक्षा को बंद कर दो, ऐसा नहीं। मैं अभ्यास करूँगा, मैं पढ़ाई करूँगा और परीक्षा के लिए लायक बनूँगा मैं। And if he's serious, then he can pass the exam with good success. और अगर वो गंभीर बनेगा तो निश्चित रूप से परीक्षा पास करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।